T1 does not imply T2. T2 property is stronger than T1 property. यानी कि आपके पास जो T2 प्रॉपर्टी है वो स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टी है T2 के, मीन्स आपके पास हर T1 स्पेस T2 होती है लेकिन हर T2 स्पेस जो है वो T1 नहीं होती. फॉर दिस वन वी आर गोइंग टू स्टडी एन एग्जाम्पल. जस्ट रिकॉल द एग्जाम्पल इन टॉपिक एग्जाम्पल्स ऑफ Hausdorff spaces. The example number 5 where we discuss the example an infinite set X with respect to the cofinite topology is not Hausdorff. तो बेसिकली ये एग्जाम्पल है and we have already studied that an infinite set with respect to the cofinite topology is T1, and now we are going to study that this set X with respect to the cofinite topology is not Hausdorff. So an infinite set X with respect to cofinite topology is T1 space but not T2 space. What is the justification of this one? Given that X is an infinite set, now with respect to the cofinite topology on X, a subset D of X is open in X if and only if. So we have just two cases for the openness कि आपके पास एक सेट X का ओपन कब होगा, that is either D is empty set or the complement of D is finite. So in cofinite topology में आपके पास जो ओपननेस की कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके पास या तो एम्प्टी सेट हो वो तब वो ओपन होगा या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट होगा. सो इट मीन्स यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट सेट है तो यहाँ पे ये पहले ही हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि आपके पास जितने भी इन्फिनिट सेट्स होंगे, सॉरी जो आपके पास क्लोज सेट्स होंगे वो जस्ट क्लोज सेट्स जो है वो फाइनाइट सेट्स होंगे. So for each pair of distinct points x, y in X, one may consider ux as the complement of y. आपके पास y और x दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और आप ux के लिए जो आप ओपन सेट चूज करते हैं दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सिंगलटन y एंड uy is equal to the complement of the singleton set X. And it is clear that X is the member of ux and y is the member of uy, but y is not the member of ux and x is not the member of uy. So it means that this space is T1 space. आपके पास ये space जो है वो T1 space है. Now we'll show that this X with respect to the cofinite topology is not T2. Let us start with the opposite case, that the contrarily हम इसको start करते हैं. That is with the assumption that X with respect to the T cofinite topology is T2. यानी कि हम contrarily ये suppose करते हैं कि नहीं ये T2 space है, यानी कि Hausdorff space है. So for any distinct pair of points we have for every distinct pair of points x, y, we have ux and uy containing x and y respectively, such that ux intersection uy is empty. So we have this one. Now because ux and uy are the open subsets of X and these open subsets are with respect to the cofinite topology, so it means that the complement of these open sets are finite. यानी कि आपके पास ux कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट सेट होगा और uy कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास फाइनाइट सेट होगा. नाउ ux इंटरसेक्शन uy द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ux कॉम्प्लीमेंट यूनियन uy कॉम्प्लीमेंट. ये आपके पास क्योंकि ux कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, uy कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो दो फाइनाइट सेट्स की यूनियन भी आपके पास फाइनाइट होगी. तो आपके पास ये जो कॉम्प्लीमेंट है ux इंटरसेक्शन uy का होल कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास फाइनाइट हो. बट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट द ux इंटरसेक्शन uy इज एम्प्टी, so it means that what is the complement of ux intersection ui, the complete complement of this one should be x. So this should be x, but the given that x is infinite. अब एक साइड पे हम कह रहे हैं कि आपके पास इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं कि इनका कॉम्प्लीमेंट x के इक्वल है, तो इट मीन्स कि x जो है वो फाइनाइट हुआ. बट द गिवन इज
कि आपके पास x जो है वो इन्फिनिट है. सो दिस इज बेसिकली द कंट्राडिक्शन ऑफ द गिवन फैक्ट. तो हमने जो स्टार्ट किया था वो हमारा स्टार्ट ही रॉन्ग था. हमने ये सपोज किया था ये जो T2 स्पेस और ये जो आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है x के ऊपर, जो x के इन्फिनिट सेट है, वो आपके पास हाउस्ड ऑफ है. सो वी हैव द कंट्राडिक्शन. सो T कोफाइनाइट this infinite set x with respect to the cofinite topology is not T2 space.